अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज का मौजू है हमारा जो हिंदुस्तान में उनका जो मणिपुर रीजन है, जो ईस्टर्न मोस्ट रीजन है इंडिया का, वहां पे जो सिलसिला चल रहा है वायलेंस का, तशद्दुद का। और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा एक बड़ी ही घबराने वाली वीडियो भी सामने आई जो अपेरेंटली तो शूट हुई थी मई के महीने में, बट 2 महीने बाद वो रिलीज हुई ऑनलाइन और उसके बाद वो वायरल हो गई, जिसमें दो खवातीन दिखाई जा रही हैं। उनको लेके जाया जा रहा है, ग्रुप ऑफ पीपल आर टेकिंग देम इनटू अ फील्ड, और उसके बाद एलिजिडली उनके ऊपर तशद्दुद हुआ और कत्लो गारत भी हुई। इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं हमें मीनी नायर, who is the author of The Lines of Separation. It's a story of 3 women divided across borders. इस पे भी बात करेंगी। और शाहनवाज अख्तर जो हैं एडिटर ई न्यूज रूम इंडिया के। शाहनवाज, पहले आपसे हम शुरू करते हैं क्योंकि आप बहुत करीबी से फॉलो कर रहे हैं इस पूरे इश्यू को। तो हमें बताएं पहले तो ये मणिपुर है किधर, और ये जो हो रहा है यहाँ पे, ये कब से हो रहा है और ये क्यों हो रहा है? जी, मणिपुर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में है और ये बहुत ही प्यारा नॉर्थ ईस्ट का जो 7 सिस्टर्स हम कहते हैं, ये बहुत ही प्यारा स्टेट हुआ करता था। और यहाँ के लोग बहुत ही खुश मिजाज और डिसिप्लिन्ड और मेहनती कहलाते थे। और अनलाइक इंडियाज नॉर्थ इंडिया, यहाँ पे पेट्रियार्कियल सोसाइटी नहीं है, तो यहाँ पे औरतों की बहुत इज्जत और बहुत कदर हुआ करती थी। बट पिछले 3 महीने से, मैं इसे 3 महीने कहूँगा क्योंकि कोई भी मामला शुरू होने के बाद पब्लिक डोमेन में बाद में आती है, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। रिजर्वेशन का एक मामला चला, उसके बाद से वहाँ पे ट्राइबल्स में जो माइनॉरिटी में कुकी कम्युनिटी है और मेती कम्युनिटी जो वहाँ मेजोरिटी में है, उन लोगों के बाद तरफ से जो लड़ाइयाँ छिड़ी वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई। और सबसे ताज्जुब की बात है कि गवर्नमेंट ने किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। और इस बीच में सबसे बड़ी बात जो पूरी दुनिया में ये बात मैसेज चला गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस पर कुछ भी नहीं कहा। वैसे हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर बात करते हैं, मगर हमारे व्यूअर्स को ये समझाएं कि आप ये बात करें कुकी ट्राइब की, ये क्रिश्चियन खवातीन थी और ये मेती ट्राइब्समैन, ये सिलसिला क्या है? ये सिलसिला बस ये आप समझ लीजिए कि ये पॉलिटिकल इशू है ना। पॉलिटिकली इसे बढ़ावा दिया गया है। दोनों ट्राइब में कन्फ्रंटेशन रिजर्वेशन के सवाल पे शुरू हुआ और मतलब एक समझ लीजिए कि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ मारकाट कर रहे हैं। और वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती इतनी ज़्यादा जिस तरह का स्टेट ये है, लेकिन उसको बढ़ने दिया गया है ना। और कुकी में बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं, नो डाउट, और उसके वजह से बहुत सारे क्रिश्चियंस वहाँ पे चर्चेज भी जलाए गए और जिसके वजह से यूरोपियन यूनियन ने इसको नोटिस भी लिया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे एग्जिस्ट करता, गवर्नमेंट अगर वहाँ चाहती, जो इंडिया में एक कोट अनकोट डबल इंजन की सरकार हुआ करती है, अगर वो चाहती तो ये चीज़ें रुक जाती। लेकिन उन्होंने चाहा ही नहीं। यू कैन अंडरस्टैंड कि इंडिया की आर्मी वहाँ पे जाती है, जो इंडियन आर्मी जो कश्मीर में जिस तरह से कंट्रोल करती है, जब वहाँ पहुँचती है तो वहाँ पे जब कुछ लोगों को रेड हैंड पकड़ती है, आर्म्स के साथ में पकड़ती है कुछ लोगों को, उसे वो छोड़ देती है। तो आप ये समझ सकते हैं और कि वो भी फ्री हैंड वहाँ पे काम नहीं कर रही है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, वो काम करने नहीं दे रही है। तो जो लड़ाई शुरू हुई थी वो बहुत बड़ी बात नहीं थी। इश्यूज हमेशा कम्युनिटीज के बीच में रहते हैं। झारखंड में भी अभी चल रहा है, मैं जिस स्टेट से आता हूँ झारखंड, वहाँ पे भी ट्राइबल्स और एक और कम्युनिटी है जो ट्राइबल अपने आप को कहती है पर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ट्राइबल नहीं है, पर उनके बीच में भी कुछ ना कुछ चलता है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पे चीज़ें हो जाएंगी ये किसी ने एज्यूम नहीं किया था। और एटलीस्ट इस लेवल पे एज्यूम नहीं किया था कि जब वोट मांगने जाते हैं तो आप ये क्लेम करते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम डबल इंजन की सरकार चलाएंगे, विच मीन्स वी विल गिव बेस्ट गवर्नेंस, we will provide everything, every scheme will be implemented well। बट यहाँ पे एकदम उल्टा हुआ है। और उल्टा इसलिए हुआ है कि कहीं ना कहीं जो साइलेंस है पीएम की और जो चीज़ें वहाँ पे जो सीएम लेवल से भी जो
स्टेट लेवल से भी चीजें हो रही हैं, उससे ये समझ में आती हैं कि कोई एजेंडा है पीछे का, किसी तरह से कोई वहाँ पे जो माइनॉरिटी हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, उनका डोमिनेंस खत्म करना है और उनका जो है एक वजूद पे भी जो है अब बनाई है, उस तरह के चीजें करनी है और किसी दूसरे कम्युनिटी को शह देना है, किसी दूसरे कम्युनिटी को इग्नोर करना है, चलिए एक्शन इसमें नहीं। बात करते हैं शाहनवाज साहब, मिनी को कॉन्वर्सेशन में लेके आते हैं। मिनी, एज शाहनवाज वाज जस्ट मेंशनिंग कि ये चीज चल रही है मई से, ये वीडियोस Yes. ही बनी मई में, तो ये अब आके इतना इशू, जो निकली है वीडियोस 2 महीने बाद, खवातीन की बेहरमती के बाद, ये इतना बड़ा इशू कैसे बना फ्रॉम अ फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू? आप अपना हिंदुस्तान में, आप ये किताब भी आपने भी फिलहाल लिखी है 3 खवातीन के ऊपर, द लाइन्स ऑफ सेपरेशन, उस कॉन्टेक्स्ट में बताएं कि इतना बड़ा इशू कैसे बना। Thank you, Ali, for having me here. What is interesting to note is that how women are held, as a pawn. Only the women, when they were paraded in that manner, when they were assaulted, as we saw in the video, did our attention come to that issue. Now, as Shahnawaz said, this is a conflict between the two tribes, Kuki and Methi, and it has been simmering. Now, what brought it about to this level? That is the thing we have to understand, because each of the tribes they have place. Now, let's leave politics, let's leave the economic factors aside. But look at the deprivation in the society and the manner in which it is treating women. So, have we really evolved? We have not evolved. Because today we think the women, if the other side can parade women like that, they are victorious. So what are we reduced to? We are simply reduced to our value, our denominational value is reduced to what we were 5,000, I don't know, years back. We are progressing back. And therefore, this video really opens our eyes into, like Shahnawaz said, really opens into our eyes, like, where have we reached? What have we done? And more or less, Manipur is in the northeastern part. There's a lot of conflict because it has got other issues it's grappling with. Having said all that, being in conflicts it's a thing we have to resolve with soft skills or communication, which the government simply kept quiet. But what is to be seen is it is a very matriarchal society where women are in power. Women are treated with respect. And that same woman has so much of power she inherits. Today she's stripped of all dignity. And she is there out, paraded in that manner. And I think it is a shame for all of us women, not only in this country, but whoever has seen it. It was a shame. And I personally was so disturbed with it, because I write about women empowerment across the borders, no matter where you are. I think this was a very, very heinous fact to, to score points. And The Prime finally, Minister of India, Narendra Modi, came out, Meeni, and I'll pose this question to you, and उसके बाद शाहनवाज के पास भी जाऊंगा. The Prime Minister of India came out and he said that the entire country is ashamed of this and no one involved in this will be spared. What do you yes, make of that? it is a very strong statement that he gave, but albeit it came a little too late. It was exactly 76 days after the incident that the government spoke about it. But having said that, why did all this happen in the first place? If there were intervention, this would not have happened. But there was no intervention because it was maybe, I don't know, it was a far-flung state. It was not in the backyard of anybody. It was not, it was not in the center of India. But he did make that statement when there was so much of pressure from all quarters, and then, as you can see on social media, everybody is speaking about it. But strangely, the women ministers, women ministers of the government came out too late. I mean, irrespective of your politics, one can speak about the condition of women, that's universal. But all the ministers of the government came only after the Prime Minister came out. I think they could have spoken, because there are some women, the finance minister, and then we have a lot of ministers who are women.
And this is a very, very personally, I feel I'm disgusted, revulsed, and I feel sad. It's शाहनवाज a thing आपकी that तरफ आऊंगा लेके ये अपना जो मिनी कह रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर केम आउट आफ्टर मंथ्स ऑफ दिस हैपनिंग there's a picture on the front page of the Telegraph newspaper जो crocodiles दिखा रही है आप I'll just show it to the viewers अगर ये देखें आपने उठाया हुआ है बेसिकली यहाँ पे जरा इसके ऊपर बात करें कि इतना टाइम क्यों लगा प्रधानमंत्री आपके उनको इस बात के ऊपर बात करने के लिए आप प्रेशर है जिस तरीके से मिनी कह रही थी सबसे बड़ी बात यह है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आवर पीएम मेंटेन ए साइलेंस। ये पहली बार नहीं है। इससे पहले जस्ट अभी ब्रिजभूषण सिंह जो मिनिस्टर हैं उनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का एलिगेशन लगा और उन लोगों ने लगाया, दे वेर द प्राउड ऑफ द कंट्री, दे हैड ब्रॉट मेडल्स फॉर द कंट्री कि हम उनको बहुत अच्छे से, खुद प्राइम मिनिस्टर उनको अपने साथ में लेके कई सारी तस्वीरें खिंचवाई और बहुत सारी बातें कहीं, तो वो लोग थे। लेकिन उसके बावजूद पीएम ने साइलेंस मेंटेन करके रखा। और जब भी कई बहुत इससे पहले हम लोग देखते थे कि मॉब लिंचिंग के केसेस होते थे, उसमें भी पीएम ने बहुत जमाने के बाद, मतलब मैं जमाना कहूँगा, सालों साल के बाद कुछ कहा। और वो तब कहा, और जब वो कहते हैं तो उसमें थोड़ी सी उस तरह की भी बात होती है कि जहाँ पे वो अपने आप को नहीं दिखाते हैं कि देयर वाज सम फेल्योर फ्रॉम देयर पार्ट। तो ये दोनों चीज़ें हैं। तो अब मामला आ गया मणिपुर का। अब मणिपुर के मामले में भी उन्होंने एक ऐसी साइलेंस मेंटेन की जिसके वजह से जब वो अमेरिका भी जा रहे थे तो भी ये सवाल उठा कि वो यूएस जा रहे हैं, पर वहाँ पे भी कई सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया। यूएस में उनके दोनों कम्युनिटीज़ के लोगों ने, मुझे लगता है, प्रोटेस्ट किया था। मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि सिर्फ मेथी ने किया था या कुकी ने किया था, पर मैंने तस्वीरें देखी थी, प्रोटेस्ट उन लोगों ने भी वहाँ पे भी किया। उसके बाद यूरोपियन यूनियन में मामला उठा ही। लेकिन अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता तो ये साइलेंस और भी लंबा जा सकता था। शायद जो डेमोक्रेसी की एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि जब हमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिल जाती है तो हम इस तरह की चीज़ें करते हैं। इंडिया ने पिछले 30 सालों में इस तरह की मेजोरिटी नहीं देखी थी जो मेजोरिटी मिस्टर मोदी को मिली है यहाँ पे। तो शायद उसी के वजह से वो अपने आप को इतना पावरफुल मानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। एंड दे हैव गॉट so much media support also. We can say, I have shown you the newspaper Telegraph. टेलीग्राफ उन कम अखबारों में से हैं या रेयर हैं, आप ये समझ सकते हैं, जो इस तरह की रिपोर्टिंग इंडिया में कर रहा है। एटलीस्ट चैनल में तो कोई नहीं है। एक एनडीटीवी हुआ करता था, दैट हैज बीन ब्रॉट बाय, तो वो भी अब नहीं रहा। तो उसमें भी सिर्फ रवीश कुमार ही करते थे वैसे। तो आप ये समझ सकते हैं कि उनके पास वो सारी ताकत थी, मीडिया की तरफ से वो सपोर्ट था और अपनी मेजोरिटी थी, जिसके वजह से वो लंबा साइलेंस हमेशा हर इम्पोर्टेंट इशू पे, जहाँ पे सरकार को घेरा जा सकता है, जहाँ पे उनके मिनिस्टर्स को रिजाइन करना चाहिए, वहाँ पे वो साइलेंस मेंटेन करके काम चला लेते थे। और I want to bring यहाँ पे भी in हुआ। Meeni very quickly. Meeni, what does it mean to be a woman in India? India rising economically, politically. अभी बात कर रहे थे शाहनवाज साहब के मोदी साहब अपना अमेरिका भी गए, फ्रांस में भी वो अपना नेशनल डे सेलिब्रेशन में शामिल हुए. What does it mean to be a woman in 2023 in India? I would just like to remind you, these last couple of days, Brij Yadav, the gentleman who was accused of molesting the wrestlers, was granted bail. And Ram Rahim Singh, another gentleman accused of rape, was also granted bail. So what are we seeing? We are trying to trivialize these kind of violations on women. We are trying to trivialize any kind of crime committed on women. And these were the wrestlers. The wrestlers were women who brought honor to the country. Now, what does it make you feel? It makes you feel vulnerable. You know, your GDP may be growing, everybody is getting richer, but the point is you're vulnerable. You're vulnerable to a society with brutal majority, and brutal majority always means lots of masculinity, toxic masculinity. That is what we see around, you know, while abusing. I am abused almost every day for voicing out opinions,
for voicing out. I do not write about things where I am or where I stay. Why does this fear come? This fear comes because you feel vulnerable. You feel the men are now given the sanction. You can do this and get away. And there is an ideology that is protecting you to do this. And ironically, at the same time, it's the same ideology that glorifies women too in another aspect, They say, women are, on the pedestal and all. But women on the pedestal have to be towing the line that they draw. If you toe the line, you are on the pedestal. But if you do not, then there's scant respect for your identity as a woman. And this is very, very threatening because you see women are the bane of the society, boon of the society. Show me how a woman is treated in a society, and I'll tell you how the society is. So, Ali, it is scary. And as a woman, I feel, if women start feeling insecure about going out, doing out, complaining about a violator, a complaint is not even registered, then it is a matter of concern. And I think we have to really, really rethink as a society, about what is really happening now. फाइनली शाहनवाज आपकी तरफ आऊंगा, बताएं कि ये जो सिलसिला चल रहा है मणिपुर में, इसके अंदर ऑब्वियसली ये खवातीन के साथ जो हुआ, इसने ऊपर लेकर आया इस इशू को, मगर इस इशू स्टिल परसिस्ट्स. इट इज स्टिल क्वाइट अ डिवाइडेड एरिया, इजंट इट? और ये चीज रुकी नहीं है उधर. थोड़ी सी, ये तो 2 महीने पुरानी ये थी, थोड़ी सी वहाँ पे रुकी है, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं रुकी है, पर वो अपने आप रुकी है. लोग वहाँ के खुद पीस चाहने लगे. लोग वहाँ पे जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं या जो कंसर्न सिटीजन हैं, उन्होंने खुद से जो है कुछ थोड़ा सा ये किया है, और इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है. और अब इंटरनेट बैन था, इंटरनेट वहाँ पे वापस आया है, तो उसके वजह से ये. और सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने खुद ये कहा है कल एक टीवी चैनल को कि सैकड़ों ऐसे मामले, हंड्रेड्स ऑफ सच केसेस हैज टेकन प्लेस. तो जब इतने सारे मामले हुए हैं, तो अभी तो वीडियो एक की आई है और कई सारे मामले हुए हैं, बट ये लगता है कि अभी हाल के दिनों में कम हुए हैं. पहले ज़्यादा हो रहे थे. जिस वक्त मई के जो महीना पूरा गुजरा है, उस मई के महीने में, हम जुलाई में चूँकि बैठे हुए हैं, तो मई के महीने में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं. और तो उसके बाद जो अगर हम उसे प्रॉपर्टी के ऊपर लेकर के आए, तो वो ज़्यादा उस पर अटैक हुए हैं, प्रॉपर्टीज़ पे, जैसे चर्चेज जलाए गए हैं और कुछ लोगों के घर भी जलाए गए हैं. तो उस तरह के डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हुए हैं. ह्यूमन लॉस भी हुआ है, लेकिन अभी जो मैं समझ पा रहा हूँ एज ए जर्नलिस्ट, अभी कम है, पहले ज़्यादा मामले हो चुके हैं. बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज आपका. मिनी, I'm going to give you the last word. And if you want to talk about के ओवरऑल सिचुएशन हिंदुस्तान में, एक तरफ तो हमने ये देखा पिछले दिनों, एक allegedly एक पाकिस्तानी खातून भी eloped वाया नेपाल, और वो एक बहुत ही चर्चा हो रही थी कि जी देखें, पाकिस्तान से भी खवातीन आके हिंदुस्तान आ रही हैं, and they feel more secure and safe in India. I don't know the veracity of that, but comment a little bit about that, and then we'll call it. See, in the larger picture, when incidents like this occur, or even when incident like the Bridge Yadav, when he was accused of violating these lady wrestlers, what comes, it makes you look back on privilege and entitlement. So who enjoys this kind of security is the women who are entitled and privileged in this country today are okay, are safe, because they have the means and they have, the caste backing, or they have all the right credentials and locations to take care of them. Now, the conflict in Manipur was because it happened to people who nobody wants, nobody cares about, who do not have the electoral power, who do not make a dent into the narrative of the country, and especially women. Like I always say, she's the least value in the whole chain. So overall, it is a question of entitlement and privilege. Entitled are feeling safe, and therefore they have acquired the narrative
and the entitled keeps saying everything is okay, everything is fine. But I think if you dig deeper and see, there's a lot of there's a lot of incidents like this happening, and I, as a citizen, feel that feel that women bodies, opposition parties should come up and speak about it, which opposition parties in India have been doing quite well, and they have been taking up this issue quite well about it. And if they really speak out, and this brute majority, which the government is enjoying, if it is not questioned, and if they are not brought to check, such incidents will occur, and it's always women, because they are the weakest, women and children. And I think, therefore, it is very, very important that all of us speak up and not be afraid and talk about it and address the elephant in the room. I'm not being able to hear you. Sorry. Sorry about that. These technical things happen because I'm trying to control it. C Nair, thank you so much for joining us, author of The Lines of Separation, and Shahnawaz Akhtar, editor, E-Newsroom India, also joining us. As they were saying, कि ये एक मेजॉरिटेरियनिज्म जो इंडिया में चल रहा है और इतनी ताकतवर बीजेपी हुकूमत है, इसकी हुकूमत मणिपुर में भी थी, लेकिन वहाँ पे इंटरनेट भी बंद था। ये 2 महीने बाद ये वीडियो सामने आई, ये सब कार्रवाइयां शुरू हुई, और शाहनवाज बता रही थी कि सिचुएशन इज अ लॉट calmer and a lot better now in that region, but जो नुकसान होना था वो हो गया। अपने कमेंट्स सजेशन जारी रखिएगा। हमारे गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, और जरूर सब्सक्राइब करें, एंड आपके साथ इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। टेक केयर।